Hello students, a very good evening to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is Nutrition in the Plants. So in this chapter already we discussed what are the importance of nutrients in the plants and what is meant by autotrophic and the heterotrophic mode of nutrition. In the last session already we discussed which conditions are necessary for the photosynthesis process in the plant and what is the role of each and every condition of a photosynthesis process. Carbon dioxide, water, sunlight, stomata are the conditions necessary for the photosynthesis process in the green plant. So now in this session we discuss about the how photosynthesis occur in green plants. And next one, production of glucose and the oxygen. How production occur in green plants. And next one, how do plants use their own food? How do plants use their own food? So we know that all green plants are called as autotrophic mode of nutrition because all green plants prepare their own food and the remaining living organism directly or indirectly depending upon the green plants. So how green plants prepare their own foods and how this process occur in the green plant and how do plants use their own food for their continuation of life. तो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स को क्या है एपोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है या प्रोड्यूसर कहा जाता है। वो अर्थ के ऊपर एक ही ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या है रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता फूड क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेकिन इनमें ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से रेडी हो जाती है उसके माध्यम से किस तरह से फूड को क्या होता रेडी किया जाता है। सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ फूड हाउ डू प्लांट्स यूज देयर ओन फूड? We know that each and every living organism require food for their life. हर एक को अगर जीना है तो फूड की क्या होती जरूरत पड़ती है। उसी तरह after the production of food, how do plants use their own food? So let's start today's session. So how photosynthesis occur in green plants? The sunlight falling on the leaves is absorbed by the chlorophyll as a solar energy. So we know that leaves are called as the food factory of green plants. जितने हरे भरे पत्ते झाड़ को रहेंगे उसको उतनी ज़्यादा क्या बोलते फ्रूट्स लगने के चांसेस रहते हैं। The sunlight falling on the leaves, the chlorophyll that is present in the leaves absorbed by and is converted into the energy. जब उस पत्ते के ऊपर सनलाइट गिरती है गिरने के बाद उसमें जो क्लोरोफिल रहता है उसको क्या कर लेते हैं ट्रैप कर लेते हैं ऑब्जॉर्व कर लेते हैं एज अ सोलर एनर्जी। द सनलाइट फॉलिंग ऑन लीव्स इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल एज अ सोलर एनर्जी। जब पत्ते के ऊपर सनलाइट गिरती है तो जितनी भी जो पत्ते रहते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं एज अ सोलर एनर्जी। The solar energy is used to split water molecules into hydrogen and the hydrogenic radicals now. So what is the role of a solar energy in the photosynthesis process? Solar energy is used to split water molecules into hydrogen and the OH radicals. So हमारे वाटर में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको क्या करना बोलते स्प्लिट करने का काम कौन करता बोलते सोलर एनर्जी करता है। Subsequently, a series of chemical reactions occur now. So in photosynthesis process, chemical reaction also occur. So when solar energy splits water molecules into the
hydrogen and the hydrogenic radicals. At that time, the chemical reaction takes place. Listen, when the sunlight is absorbed by the leaf of a plant, so at that time, the chemical reactions occur in the green plant. जब उसके ऊपर लाइट गिर जाते हैं, गिरने के बाद उस लाइट को सोलर एनर्जी पर यूज करते हैं, तो सोलर एनर्जी का क्या यूज रहेगा? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सोलर एनर्जी इन अ photosynthesis process? Solar energy split water molecules into hydrogen and the hydrogenic radicals. Oxygen from OH released into the air. Now see, then the oxygen from OH is released into the air. जो हमारे हाइड्रोजनिक रेडिकल्स रहते हैं, उसमें से अपनी से हवा है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है. ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द OH radicals. Hydrogen combines with the carbon dioxide to form a glucose. Now see, when hydrogen combined with the carbon dioxide to form the glucose, ध्यान में रखिए. Now see, when the oxygen combined with the carbon dioxide, जब भी ऑक्सीजन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, तब हमें क्या होता हो? ग्लूकोज क्या है? फॉर्म हो जाती है. The net result of a photosynthesis process is the production of glucose and the oxygen. So what is the result of a photosynthesis process? The net result of a photosynthesis process is the production of oxygen and the glucose. Understand? When hydrogen atoms combine with the carbon dioxide to form the glucose, the net result of a photosynthesis is the production of glucose and the oxygen. Now see with the help of a chemical reaction. अब इसको क्या है? केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. Now see, when carbon dioxide react with water, जब अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है in the presence of a sunlight and chlorophyll. Understand? In the presence of a chlorophyll, excuse the glucose C6H12O6 plus 6O2. This one is a glucose and this one is a oxygen. Listen, when the photosynthetic process is complete in the green plants, it gives the glucose and the oxygen. जब ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमें क्या मिलता है? तो ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन. Listen everybody. So with the help of a chemical reaction, the net result of a photosynthesis is the production of a glucose and the oxygen. ये किसका रिजल्ट है बोलो तो? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या है? रिजल्ट है. When कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान में रखिए, when carbon dioxide react with water in the presence of a sunlight and the chlorophyll, it gives the glucose and the oxygen. This is the net result of a photosynthesis process. All right, understand? तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा? तो ग्रीन प्लांट्स में क्या है? ऑकर हो जाए. So you understand? Now see the next one. The glucose sugar is immediately utilized by the cell or is stored in the form of an insoluble starch. Now see, the glucose sugar is immediately utilized by the cell or it is stored in the form of an insoluble starch. The presence of a starch in the leaves indicate the occurrence of a photosynthesis process. The starch is a carbohydrate. Now see, after the production of glucose, this glucose is immediately stored in the leaves. जब इस ये ग्लूकोज फॉर्म हो जाने के बाद इसको क्या होता है? इमीडिएटली क्या है? लीव्स में क्या है? स्टोर किया जाता है in the form of insoluble starch. Listen, some of the oxygen may be used in respiration in the leaf cell for respiration, but the major portion of it is released into the atmosphere by the leaves through the stomata. Now see, जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन क्या होता है? कुछ लीफ के सेल उसको क्या है? कुछ परसेंटेज में क्या है? यूज करते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कब लेते हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द ग्रीन प्लांट. लिसन,
जब भी हम हवा लेते हैं, कब लेते हैं? जब तक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमें ऑक्सीजन क्या बोले तो नहीं मिल पाता। We can say that this oxygen is not waste because it is needed by all living organisms for respiration. Now, so after the production of oxygen, this oxygen is very important for the remaining living organism for respiration process. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होता है, रिलीज हो जाने के बाद वो जो ऑक्सीजन है वो रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या हो तो बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट। लिसन, दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स। लिसन और राइट डाउन हाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स, किस तरह से होते हैं उसके बारे में हमें पॉइंट्स वाइज लिख लेना। राइट डाउन how photosynthesis process occur in a green plant. The sunlight, first one point. The sunlight falling on leaves is observed by the chlorophyll as solar energy. The solar energy is used to split water molecules into hydrogen H and hydrogenic radicals and hydrogen OH radicals. Oxygen from OH is released into the air. Hydrogen combines with carbon dioxide CO2 to form glucose. The net result of photosynthesis is the production of glucose and the oxygen. Now see, the net result of photosynthesis is the production of glucose and oxygen. So इस प्रकार से क्या बोलो तो प्लांट्स में क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है ऑकर होता है। Everybody understand? Now see the next one. How do plants use their own food? प्लांट्स अपने ओन फूड को किस तरह से क्या बोलो तो यूज करते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है डिस्कशन करेंगे। Now the next one is how do plants use their own food?
plants use their own food. Next one concept is how do plants use their own food. Now see. सो प्लांट किस तरह से फूड्स को क्या है वो अपने खुद को फूड को किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. नाउ सी द फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर. नाउ सी व्हेन द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर. जब ग्रीन प्लांट्स अपने खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर करने के बाद वो फूड फूड क्या होता है एक सिंपल शुगर में क्या है सिंपल शुगर के फॉर्म में क्या है रहता है. द प्लांट यूजेस द फूड टू गेट एनर्जी. नाउ सी व्हेन प्लांट यूजेस द फूड टू गेट द एनर्जी you know that in the universe number of living organism using food for the energy. हम सभी को मालूम है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर उसके लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए उसको क्या बोलते हो एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड आइटम्स. सम ऑफ इट इज यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ. नाउ सी सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ. कुछ प्लांट्स खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इसलिए खुद की ग्रो करने के लिए वो क्या उसको यूज कर लेते हैं. Extra food is stored in the form of a stalk in the leaves, stem, and the roots. Now see, the extra food is stored in the form of a stalk in the leaves, stem, and the roots. We usually eat those parts of plants as vegetables or fruits which have food stored in them. Now see, extra food is stored in the form of roots, like leaves, stems, and the roots. We usually eat those parts of plants as vegetables like our sweet potato, carrot, potato, spinach, sugarcane, and the mango. So these are the examples of plants. Understand? Now see, write down the food made by the green plants. The food made by green plants is in the form of simple sugar. Is in the form of a simple sugar. Now see first one. The plant uses the food to get energy. Some of it is used for its own growth. Now see number third. Extra food is stored in the form of stock in leaves, stems and roots. Understand? So extra food is stored in the form of a stock in leaves, stems and the root. तो इस तरह से फूड्स प्लांट्स क्या होते हैं अपने खुद जो प्रिपेयर करते फूड वो खुद को क्या है इस तरह से वो क्या होते हैं यूज कर लेते. Understand? So how do plants use their own food? Now see
The next one concept is so what are the synthesis of a photosynthesis process? Sorry, significance of a photosynthesis process. तो उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेंगे. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ photosynthesis process? Now see. The next one concept, significance of photosynthesis process. So now write down significance of photosynthesis process. Significance of photosynthesis process. Photosynthesis process. So what are the significance of a photosynthesis process? Now see, plants prepare their own food by photosynthesis process, and these plants are in turn eaten by animals including human beings. Thus photosynthesis provides food for all. So already we discussed plants prepare their own food with the help of photosynthesis process. Photosynthesis provide food for all. Understand? तो प्लांट्स अपने खुद वो क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं with the help of photosynthesis. And next one, presence of free oxygen in the atmospheric air is the result of photosynthesis process. Now see, the presence of free oxygen in atmosphere is a result of photosynthesis process. No animal, including human beings, can survive without oxygen, as it is needed for respiration day and night. Thus, photosynthesis provides oxygen for respiration. Now see, the next one significance is a photosynthesis process provide oxygen for the all living organism in the universe. The first one is a photosynthesis provide food for all, and next one is a photosynthesis process provide oxygen for all the human beings and all living organism in the universe. After the completion of a photosynthesis process, free oxygen in the atmosphere. This oxygen play a very important role in the human beings and the living organism in the respiration process. The next one, synthesis is a all animals, including human beings, inhale oxygen from the atmosphere for the respiration and give out the carbon dioxide, which is taken in by the green plants during the photosynthesis process. So all animals, including human beings, inhale oxygen from the atmosphere and give out the carbon dioxide, which is taken by the green plants for the photosynthesis process. Only that, in our respiration system, all human beings inhale the oxygen and give out the carbon dioxide. हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम सांस लेते समय क्या होता है, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, रिलीज करते हैं. So this release of carbon dioxide play a very important role in the production of food for the plant. जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ग्रीन प्लांट अपने खुद का फूड क्या बोलते हो प्रिपेयर कर लेते हैं. Thus carbon dioxide oxygen balance is maintained in the atmosphere. The next one, significance of a photosynthesis process. So with the help of a photosynthesis process, carbon and the oxygen balance is maintained in the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का बैलेंस किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द ओनली photosynthesis process. Understand? The first one significance of photosynthesis is, now see, one is photosynthesis provide food for all.
Next one, photosynthesis process provide oxygen for a respiration process. And last one is carbon dioxide oxygen balance is maintained in the photosynthesis process. So these are the significance of photosynthesis process. So write down. First one significance is photosynthesis provide. First one significance. Photosynthesis provides food for all. Now next one, photosynthesis provides oxygen for respiration process. So photosynthesis maintain carbon dioxide oxygen balance in the atmosphere. So these are the significance and the importance of a photosynthesis process. Understand? So what are the significance of a photosynthesis? One is photosynthesis provides food for all. Photosynthesis provides oxygen for the respiration process in the living organism. And next one, photosynthesis maintains carbon dioxide oxygen balance in the atmosphere. Understand? Okay, now the next one concept is other modes of nutrition in the plants. अब तक हमने पढ़ा था two modes of nutrition in the plant. One is ectotropic mode of nutrition and next one is heterotrophic mode of nutrition. So now we discuss about the other modes of nutrition in a plant. Non-green plants which do not possess chlorophyll cannot synthesize their own food. Now see. So why non-green plants cannot prepare their own food? Because the absence of chlorophyll in there. Non-green plants क्या होता है खुद का फूड खुद क्या होता है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है क्लोरोफिल क्या है absent रहता है. Like animals and the human beings, they also depend on the food produced by other plants or decayed organic matter. So mode of nutrition of such plants is called as the heterotrophic. So you know that those living organisms cannot prepare their own food is called as the heterotrophic mode of nutrition. So now, so types of heterotrophic nutrition. Nutrition in heterotrophic plants is of many types. Now see. So nutrition in the heterotrophic plants is many types. उसके क्या होता है बहुत सारे क्या है heterotrophs के type है. First one is a parasitic nutrition, saprophytic nutrition, symbiotic nutrition, insectivorous nutrition. So these are the types of heterotrophic nutrition in plants. Understand? ये किसके type से बोलते हो heterotrophic mode of nutrition in the plant. Understand? Okay. Today's topic will be continued on next session. So in this session, we already discussed how photosynthesis occur in the green plant. So with the help of sunlight, with the help of carbon dioxide, and with the help of a chemical reaction that is occurring in the photosynthesis process, and after the completion of photosynthesis process, the production of glucose and oxygen. And the last one concept we discussed, how do plants use their own food? So plants use their own food for the energy. Some plants store in the food in the form of starch in leaves, stems, roots,
सो इस तरह से प्लांट्स अपने फूड्स को क्या बोले तो खुद का फूड्स क्या है, खुद क्या है प्रिपेयर करना. ओके, today's topic will be continue on the next session. Stay safe, stay indoors from Universal Public School, Aura, Sanchar.